Hello and good evening students, and welcome back to Global Online Platform. This is Chandni Swarnakar, and today we are going to cover three important writers from post-colonial literature, okay? Gabriel Garcia Marquez, Judith Wright and SINCLAIR ROSS, okay? You can get my lectures at 8 PM on a daily basis, but वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दिसंबर में JRF लेने के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन करना होगा। उसके लिए इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट कोर्स जो है ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आई है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगी। एग्जाम के लेटेस्ट पैनल डिफिकल्टी के लेवल के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स PDF फॉर्मेट में अवेल कराया जाएगा, जिसे आप इजीली अपने मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसके साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसे एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है, तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और इस सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है दैट यू आर गोइंग टू गेट पेपर 1 कंप्लीट कोर्स फॉर फ्री, सो यू आर सेविंग 3600 रुपीज है, ओके? We have done this. Now let's cover the writers for today. Now let's talk about first Gabriel Garcia Marquez, okay? So he was born in 1927 and died in 2014. He was born in 1927 and died in 2014, ठीक है? तो सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिए कि he is a Colombian writer, so this is the spelling, not that. Colombian writer, ठीक है? कोलम्बियन नॉवलिस्ट हैं, तो हम इनके 3 नॉवेल्स करेंगे। नाउ ही इज ऑल्सो नोन एज गेबो एंड गेबिटो, ठीक है? ये 2 नाम भी हैं, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ नोबेल प्राइज भी ही वाज अवॉर्डेड with Nobel Prize in Literature in 1982. So this is the basic facts about Gabriel Garcia Marquez. Other than that, let's talk about the novels. Okay, so the first novel is 100 Years of Solitude. 100 Years of Solitude, which was published in 1967. So what do you have to do here is, you have to do the characters, okay? You have to do the summary, as I always say, and you have to remember the publication year, okay? You have to also know the theme of this. Okay, now other than that, I'll tell you, it's a story of 7 generations of the Biondia family. It talks about Biondia family and its generations and in the town of Mekonda. So in particularly they are talking about Mekonda town, and where they are talking about Biondia family and its 7 generations. Okay, so now throughout the novel, the one person, Daniel Erickson, has commented that throughout the novel the characters are visited by ghosts. So you will see ghosts throughout the story, and ghost is not a merely considered as a character. It's actually symbol for what? For the past and the haunting nature it has over Mekonda, okay? So it talks about all of that. Now the ghosts and the displaced reputation that they evoke are in fact firmly grounded in the particular development of Latin American history. So you have to understand that. Now who has commented that? Do remember that, Daniel Erickson. And it also has an essence of magic realism. It's an example of magic realism. So you have to understand magical realism, where supernatural powers or superstitious elements are being involved, and you can see them, okay? And it also based on the reality, so magical realism. You can also search somewhere, of course not somewhere, you can search on the Google and you can find out. Now the second work is The Autumn of the Patriarch, which was published in 1975. So it's a story. It's an interesting story. There's a person, okay? So there's a character who is actually faking his own death. So just imagine, for example, I am faking my own death and I am alive, but I'm just telling everyone that I'm dying, okay? I've died. So it's an interesting one. You just need to find out you need to read it, and when you read, you will find out why the person had done what he had done, okay? The story is divided into 6 sections. So 6 sections, you do remember that. Now the third work is, not the last, Love in the Time of Cholera. Love in the Time of Cholera. It's like 1988. The main character of the novel are Florentino Ariza and Fermina Daza. So you are going to see a story, a love story, okay? So this
two are the main characters, Florentino and Fermina. Now, Florentino and Fermina fall in love when they were young. Okay, so अभी प्यार में पड़ जाते हैं. It's like ना, अभी आप रिलेट कर पाओगे, आपने नॉर्मली भी इस तरह की स्टोरी देखी है. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, सीक्रेट रिलेशनशिप ब्लॉसम बिटवीन द टू विद द हेल्प ऑफ फर्मीनाज आंट एस्क्लॉस्टिका. वाओ, व्हाट अ नेम, दिस इज सो एस्थेटिक ना. ओके, सो नाउ दे यूज्ड टू एक्सचेंज लव लेटर्स, बट फर्मीना के जो पिता हैं लोरेंजो दाजा, एक दिन उन्हें पता चल जाता है, अब अपनी डॉटर के जो है, ही फोर्सेस हिज डॉटर टू स्टॉप सीइंग फ्लोरेंटिनो इमीडिएटली. उसके बाद चीज़ें जो हैं टर्न होनी शुरू होती है. ऐसा ही होता है ना इंडियन फैमिली में. Now when she refuses, he and his daughter move in with his deceased wife's family in another city. दूसरे फैमिली, दूसरे सिटी में मूव हो जाते हैं, उनकी वाइफ की जो फैमिली है ना उस सिटी में. Now regardless of the distance, of course, दूरी तो कुछ नहीं होती भाई, ऐसा कहते हैं ना. फर्मीना एंड फ्लोरेंटिनो कंटिन्यू टू कम्युनिकेट विया टेलीग्राफ. आप टेलीग्राम से करते होगे, इंस्टा से करते होगे, नहीं तो वो दे यूज टू यूज टेलीग्राफ. नाउ अपॉन हर रिटर्न फर्मीना रियलाइज द रिलेशनशिप विद फ्लोरेंटिनो वाज नथिंग बट अ ड्रीम. ऑफ कोर्स जो यूथ में होता है, जब 11th 12th ग्रेजुएशन तक, तो वी फील लाइक ओके वी वेर सो स्टूपिड. सो शी आल्सो रियलाइज्ड इट, फर्मीना. Now was nothing but a dream since they are practically strangers. Of course, they are practically strangers. To break of her engagement, Florentino returns all his letters. So बाद में वो return कर देती है. But Florentino की एक बात मैं आपको बताती हूँ. ऐसा कहते हैं, मतलब स्टोरी में पूरी जो नोट डाउन है, वो शायद बहुत सारी औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है. But they mentioned that Florentino was having so many sexual relationship with so many people, so many women, but he was not in love with anybody. Like what is happening? Why? Okay, so the story is very interesting. You can read it out. Now, the fourth one is Chronicle of a Death Foretold. Okay, Chronicle of a Death Foretold, 1981. It's not a novel, it's a novella. Okay, it's a novella, shorter form of novel. जो है ना, मतलब क्या छोटी होती है थोड़ी. The book is a non-linear narrative told by an anonymous narrator and begins on the morning of Santiago Nasser's death. So Santiago Nasser's death जो है beginning होती है, ये आपको ध्यान में रखना है. Non-linear narrative है और anonymous narrators हैं. इसमें पूरी तरह से जो आप देखोगे ना, एक कोई पैटर्न नहीं दिखेगा आपको. It tells the story of Santiago Nasser's murder in a small Colombian town where the entire community is aware of the impending crime but fails to prevent it. बचा नहीं पाते हैं. बेसिकली एक लड़की भी इन्वॉल्व होती है. वो क्या होता है, स्टोरी इस तरह से है दैट शी वाज इनटू समथिंग या शी वाज इनटू समवन एल्स, बट जब उसके भाई पूछते हैं ना, तो ये संटियागो नासर का नाम ले लेती हैं, तो उस वजह से जो है बेचारे की मृत्यु हो जाती है. नाउ यू कैन रीड द स्टोरी, इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. Now let's cover Judith Wright. Okay, 1915 to 2000. अब किन बच्चों का 2000 में जन्म हुआ है? Do relate to it. Now Australian poet हैं, कैंपेन क्या इन्होंने for aboriginal land rights के लिए campaigns किए हैं. Now Wright was a founding member for what? For Wildlife Preservation Society of Queensland. ये जो फैक्ट है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थी. ठीक है, तो ध्यान में रखिए. शी वॉज द सेकेंड ऑस्ट्रेलियन टू रिसीव द क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री इन 1991. शी वॉज द सेकेंड ऑस्ट्रेलियन वुमेन. ओके, तो उसके पहले जो है नहीं मिला है क्वींस गोल्ड मेडल किसी को. शी वॉज द सेकेंड ऑस्ट्रेलियन. ओके, नाउ 1991 में नहीं मिला है. बस वर्क्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो लेट्स कवर द वर्क्स, लेट्स just cover them, and do remember that there is no need to go deep into it, dig into it. You do not have to. Now the first work is Women to Man. Women to Man, 1949. It consists of 44 poems. Do remember this. Now the second one is Gateway. Okay, Gateway, whatever you want to call it. Now the third one is Train Journey. सफर क्या होगा ना, ट्रेन से. Then Hunting Snake and the Two Fires. You can remember this like this. Women, there is a woman who met to a man at the gate,
okay, and then they went to a journey, okay, train journey, and after, like, while traveling, they faced like they saw some snakes, hunters, and there was a villager who were trying to free those snakes, okay, by using fire or by just fighting, whatever you want to. So make a story and do remember this things, okay, ताकि आप भूलो ना. Now the third writer is Sinclair Ross, 1908 to 1996. Okay. Now Canadian author है ये Sinclair Ross. See, so he wrote novels लिखा है उन्होंने, short fictions लिखा है, basically life on the Canadian प्रेरीज एक जगह है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए. नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट फिक्शंस लिखे हैं. ना शॉर्ट स्टोरीज में आपको ध्यान रखना है कि एक शॉर्ट स्टोरी है द लैम्प एट नून एंड अदर स्टोरी, जिसमें ये सारे जो है स्टोरीज इंक्लूडेड हैं, ठीक है, कंसिस्ट करते हैं. द लैम्प एट नून एंड अदर स्टोरीज, जिसमें द लैम्प एट नून करके एक अपनी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है. द पेंटेड डोर, कॉर्नेट एट नाइट, अ डे विद पेगासस, ठीक है. So these are the short stories. Now नॉवल के बारे में बात करते हैं. एक ही नॉवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, As for me and my house. As for me and my house, 1941. It was published in 1940. See, now to understand the story, it's all about Mrs. Bentley, okay, Philip Bentley, and there's also one person, so you'll get to know. Now the narrative is written in the form of a diary. पूरी जो स्टोरी है आपको डायरी के फॉर्म में चीज़ें बता रही है. दैट इज केप्ट बाय मिसेस बेंटले. तो किसकी डायरी है? मिसेस बेंटले की डायरी है, ठीक है. नो, मिसेस बेंटले इज द वाइफ ऑफ फिलिप बेंटले. सो ये याद रखिए, प्रोटेस्टेंट रेवरेंड इन अ स्मॉल टाउन बाय द नेम ऑफ हॉरिजन. तो ये क्या है ना, फिलिप बेंटले जो है बहुत ज़्यादा किसी तरह के है ना शो नहीं करते, कोई लव शो नहीं करते हैं अपने वाइफ की तरफ, थोड़े पत्थर दिल के हैं. So Mrs. Bentley's marriage is on the rocks and her husband does not show any signs of affection to her. So she desperately tries to rekindle Philip's affection from time to time, but her efforts prove futile. So बहुत ज़्यादा वो कोशिश करती हैं that चीज़ें बेहतर हो, चीज़ें चेंज हो, but कुछ नहीं हो पाता बहुत कोशिश करने के बावजूद. Now meanwhile Mrs. Bentley befriends Paul Kirby, okay, who is a teacher है ना, philologist. उसके बाद पॉल कर्बी से दोस्त होती है. कहीं से तो बंदा थक के हार के कहीं ना कहीं तो जाएगा. नाउ पॉल इज क्वाइट अफेक्शनेट टुवर्ड मिसेस बेंटले एंड बट शी डज नॉट फील द सेम वे. बट वो उसके तरफ फील नहीं करती. लड़कियों की यही प्रॉब्लम है. व्हेन देयर इज लव, नो, शी विल नॉट गो टू देम. इवन इट हैपन्स टू बॉयज. जहाँ पे उन्हें अफेक्शन मिल रही होगी ना, वहाँ नहीं जाएंगे. जहाँ पे उन्हें धुतकार रहे होंगे वहाँ जाएंगे. सो यही हो रहा है. फिर आगे क्या होता है, स्टोरी यू विल हैव टू रीड एंड यू विल हैव टू नो, ठीक है. तो स्टोरी में आपको करना क्या है, पब्लिकेशन ईयर याद रखिए. आपको याद रखना है कैरेक्टर्स तो ऐसे 3 से ज़्यादा और कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू डू रीड एंड डू रिमेंबर दैट. प्लॉट लाइन तो मैंने अभी बता दिया आपको. उसके अलावा जो है थीम ध्यान में रखिएगा, ठीक है. बस वो तो 1.5 पेजेस का आप पढ़ोगे ना स्टोरी तो आपको पता चल जाएगी. नाउ थैंक यू so much for your time and we'll meet in the next lecture and all the very best.